Hello student, I am Jagruti Garat. Welcome in today's chemistry lecture. Today we learn the third one topic, that is ionic equilibria. In ionic equilibria, first we learn these two words, that is ionic and equilibria. So ionic means associated with ions and equilibrium means state at which certain measurable properties such as pressure, density, color, concentration, etc. do not change with the time. Okay, so these two words combine to form a definition of ionic equilibria. So there is the definition of ionic equilibria is the equilibrium between ions and unionized molecule in solution is called as the ionic equilibrium. Means in aqueous solution there is a presence of ions of that substance as well as undissociated molecules of that substance is present in a same media. Okay, so the equilibrium between or equilibrium established between the ions and unionized molecule of same substance present in the solution. And equilibrium, in equilibrium there is the use of reversible arrow. Reversible arrow means two way reaction, that is forward reaction as well as reverse reaction. Okay, and equilibrium is established in the weak acids or weak bases. Okay, means weak electrolytes. Next part is the electrolytes, the substance which gives rise to ions when dissolved in a water are called as the electrolytes. Means जो substance वाटर में डिजोल्व करने के बाद अपने आयंस फॉर्म कर लेता है, ओके, सो दैट phenomenon is known as the electrolysis process. Okay, and the substance is known as the electrolytes. Electrolytes divided into two types, strong electrolytes and weak electrolytes. So first we learn about the strong electrolyte, that is the electrolytes ionizing completely or mostly completely are a strong electrolytes. Okay, means जो electrolytes है, जो substance है, वो aqueous medium में पूरे के पूरे completely ionized हो जाते हैं, completely ions form कर लेते हैं, जितने भी molecules हम लोग use कर रहे हैं उतने ionized हो जाते हैं. Okay, that is called as a strong electrolyte or that substance is known as the strong electrolyte. For example, strong acid, strong base and salts. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट जो है वो अपने टोटल आयंस या टोटली वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, अपने आयंस फॉर्म कर लेता है. बट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन अ एक्वियस सॉल्यूशन आर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. एक्वियस मीडियम में क्या करते हैं, वो अपने आयंस फॉर्म कर लेते हैं लेकिन स्मॉल एक्सटेंट में, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होते. सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ undissociated molecule of same substance is present in the aqueous solution. ओके, मतलब aqueous solution जो बनता है वहाँ पे पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन एज वेल एज अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. Okay, so this type of electrolyte is known as the weak electrolyte. Okay, next is the degree of dissociation. This term is applicable for weak electrolytes. Okay, so in strong electrolyte there is a 100% dissociation. Okay, so degree of dissociation of strong electrolyte is 100%. So there is the no need to find the degree of dissociation. Okay, degree of dissociation means amount of substance dissociate in the aqueous solution. वो जो amount है वो क्या है, degree of dissociation. So the degree of dissociation of an electrolyte is defined as a fraction of total number of moles of a electrolyte that dissociate into its ion when the equilibrium is attained. मतलब equilibrium जहाँ पे establish हो जाता है वहाँ पे number of mole कितने dissociate हो गए हैं from the total number of moles. Okay, so that can calculated by using the degree of dissociation.
So degree of dissociation is denoted by alpha, letter alpha. Okay, so alpha is equal to number of moles dissociated divided by total number of moles. Okay, so percentage dissociation can be find out by using the alpha. So alpha into 100 is equal to the percentage of dissociation. Okay, so by using the alpha we can calculate the percentage of dissociation. Next term is the acids and base. We all are familiar with acids and base. Okay, so some example of acid and bases can be written in the presentation, that is acids and base are familiar chemical compounds. So acetic acid is found in vinegar, citric acid in lemons, magnesium hydroxide in antacids. Okay, so antacid यूज करते हैं, उसमें क्या रहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो न्यूट्रलाइज द एसिड्स. अमोनिया इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. Another is the tartaric acid is present in a turmeric paste. These are some acids and base we come across in the everyday life. इससे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. ओके, यूज़ करते हैं या हम लोगों ने पढ़े हैं, देखे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सम थेरीज वी कैन क्लासीफाई द एसिड्स एंड बेस. ओके, बहुत सारे थेरीज ऐसे डिस्कवर हुए हैं. उन्होंने क्या किया है, एसिड और बेस के अलग अलग डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं कि हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं कि एसिड्स कौन से हैं, बेस कौन से हैं. ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं क्या एसिड, ये एसिड है वो बेस है, नहीं. सो अकॉर्डिंग टू सम थेरीज और अकॉर्डिंग टू सम रूल्स we can find the acids and base or classify into acids and base. So first theory is Arrhenius theory. Okay, so according to Arrhenius theory, acid is called as a substance which contains hydrogen and gives rise to H plus ion in a aqueous solution. Means जो substance aqueous solution में H plus ion produce करता है उस सब्सटेंस को एसिड बोलते हैं, या जिसके पास हाइड्रोजन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड. फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल. HCl मॉलिक्यूल हैविंग द हाइड्रोजन, आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ HCl it produce H plus ion in their aqueous solution. अनदर एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड. हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. So acetic acid dissociate to form a acetate molecule as well as H plus ion. So it produce the H plus ion. So acetic acid is called as the acid, right? Another term is base. So base is a substance that contain OH group and produce hydroxide ion in aqueous solution. एक्वियस सॉल्यूशन में बेस क्या फॉर्म करता है, OH ग्रुप और सब्सटेंस कंटेनिंग द OH ग्रुप. ओके, फॉर एग्जांपल NaOH having the OH group, right? After the dissociation of NaOH in aqueous solution, it forming the Na plus and OH minus. Means NaOH dissociate to form a OH group. Okay, means NaOH is called as a base, right? So we can classify according to acid and base, we can classify it according to the Arrhenius theory, which one is the acid, which one is the base. Okay, जो H plus ion रिलीज करता है वो एसिड है, जो OH minus रिलीज करता है वो बेस है. Okay, now next theory is the Bronsted-Lowry theory. So according to this theory, acid is classified as a substance that donate a proton. जो स्पीसीज प्रोटॉन डोनेट करती है उसे क्या बोलते हैं, एसिड. नेक्स्ट टर्म इज द बेस. बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. जो स्पीसीज एक्सेप्ट प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है उसे क्या बोलते हैं, बेस. फ्रॉम द अनदर स्पीसीज, अनदर सब्सटेंस से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो क्या है, बेस. ओके, अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफरिंग बाय अ प्रोटॉन
इज सेड टू बी अ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर, जिसमें प्रोटॉन का डिफरेंस है, जिस दो स्पीसीज में प्रोटॉन का डिफरेंस है, उस पेयर को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH. अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने जो थ्योरी देखी, अरेनियस थ्योरी, उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू द H+ आयन एंड OH- आयन एसिड और बेस क्लासीफाई कर सकते हैं. बट इन दिस थ्योरी देयर इज द ओनली H+ आयन डिफरिंग फ्रॉम द एसिड एंड बेस. ओके, सो जो स्पीसीज H+ आयन डोनेट करती है वो एसिड है, और जो स्पीसीज H+ आयन एक्सेप्ट कर लेती है वो बेस है. यहाँ पे नो रोल ऑफ OH- और OH ग्रुप. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल HCl molecule react with NaOH to form NaCl plus H2O. means HCl donating proton to the NaOH. मीन्स HCl डोनेट कर रहा है मतलब क्या हो गया? वो एसिड. NaOH एक्सेप्ट कर रहा है मतलब वो क्या हो गई? बेस. ओके, सो जो स्पीसीज डोनेट करती है H+ आयन वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करती है वो बेस है. नेक्स्ट थ्योरी इज द लेविस थ्योरी. ओके, सो दिस थ्योरी इज डिपेंड अपॉन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, so acid any species that accept a sharing in an electron pair. okay, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? थोड़ी देर के लिए शेयर होती है. ओके, 11th में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है. व्हाट इज मीन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विथ अनदर स्पीसीज. ओके, सो जो स्पीसीज एक्सेप्ट कर लेती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है? एसिड है. और जो स्पीसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो क्या है? बेस है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल. ओके, सो अमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर्मूला ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल इज NH3. so nitrogen having valency 3, so fulfill with hydrogen, and nitrogen having one lone pair of electron. okay, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ शेयर करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के पास. ओके, सो फॉर एग्जांपल H+ आयन, H+ आयन हैविंग नो इलेक्ट्रॉन. ओके, तो अगर बॉन्ड फॉर्म करना है H+ आयन को अमोनिया के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है तो उसे पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगने वाले हैं. ओके, मीन्स इट शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अमोनिया मॉलिक्यूल शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक्सेप्ट कर रही है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है? तो हाइड्रोजन जो है, H+ आयन जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है. मीन्स H+ आयन इज द एसिडिक स्पीसीज. ओके, एसिड. एंड अमोनिया, फ्रॉम अमोनिया नाइट्रोजन डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स ammonia molecule acting as a base. okay, so according to the Lewis theory we can classify the acids and base according to the sharing of electron pair. okay, now next part is the amphoteric nature of water. Amphoteric nature means species acting as a acid as well as base. okay, and water having the ability to act as a acid as well as base. okay, so such behavior is known as the amphoteric nature of water. okay, so according to the Arrhenius theory, water having the H+ ion or OH group, okay, means water dissociate or water ionize to form a H+ ion and OH- ion. So it forming the H+, so it acting as acid, it forming the OH, then it acting as a base. okay, so water having amphoteric in nature. Next part is dissociation constants of weak acids and weak base. okay, so by finding the dissociation constant
the dissociation of weak acid, consider as a HA. HA is a weak acid in a water, is expressed as. So dissociation of weak acid is incomplete. Okay, so there is a representation of double arrow. Okay, reversible arrow. So HA is in a aqueous state, reversible arrow, H plus ion, aqueous plus A minus aqueous. Okay, so there is a presence of H plus ion, A minus ion and HA molecule in the aqueous solution. So the equilibrium constant called as a acid dissociation constant. For this equilibrium, by applying the law of mass action, Ka is the equilibrium constant, is equal to product of concentration of product divided by concentration of reactant. So applying the law of mass action to the above reaction to find Ka is equal to, K is the equilibrium constant and A indicating the acid dissociation. So is equal to concentration of H plus ion into concentration of A minus ion divided by concentration of HA molecule. Okay, so this is the equation number 3.3. Similarly, the dissociation of weak base consider as a BOH. Okay, so dissociation of BOH in a water, to represent BOH is in a aqueous state, reversible arrow, B plus plus OH minus. Okay, so there is the equilibrium established between the ions and the undissociated molecule. So applying the law of mass action to this reaction to form Kb. Kb is the equilibrium constant of the base or dissociation constant of a base, is equal to concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. Okay, so Ka and Kb is similar, only the difference between the acid and base. Okay, so the equilibrium constant for a dissociation इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इज रिस्पेक्टिवली, ये मैंने आपको बता दिया के ए क्या है, के बी क्या है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. सो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर weak acid and weak base by using the dissociation constant. Okay, so first one, weak acid. So consider an equilibrium of weak acid, that is HA. Consider HA is a weak acid. Okay, so in this solution, partly as a undissociated species, that is HA, and partly H plus ion and A minus ion. Okay, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. ओके, सो एट द टाइम ऑफ डिसोसिएशन इन एक्वियस सोल्यूशन कंटेन H plus ion, A minus ion and अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, दैट इज HA. ओके, मतलब एसिड के आयंस भी वहाँ पे फॉर्म हो रहा है और अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल भी वहाँ पे है. ओके, सो दिस कंडीशन ओनली इज इन अ weak condition. Okay, not in a strong. In strong there is the total dissociation of the molecule, totally dissociate. Okay, so consider the reaction HA is in a aqueous state, reversible arrow, H plus ion plus A minus ion. Okay, so see, by applying the law of mass action, K is equal to H plus ion, concentration of H plus ion into concentration of A minus ion divided by concentration of HA. Okay, so suppose 1 mole of acid that is HA, जो हम लोगों ने HA कंसिडर किया है एसिड, वो कितना है 1 मोल, इज इनिशियली प्रेजेंट इन वॉल्यूम VDM क्यूब. कितना वॉल्यूम है, VDM cube. So VDM cube contain 1 mole of acid. Okay, at equilibrium the fractional dissociation will be alpha. Okay, so dissociation constant is alpha. यहाँ पे weak acid है तो degree of dissociation apply हो जाएगी. Okay, so by using the degree of dissociation we can find the how much amount of the acid get dissociate in the aqueous medium. Okay, so the fraction of an acid that remain undissociated
विल बी फाइंड बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, हम लोगों ने इनिशियल कितना एसिड लिया है, 1 मोल. सो 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल. So undissociated molecule is equal to 1 minus alpha, that is the degree of dissociation of undissociate molecule. So see this chart. In this chart there is the first representation of reaction. According to this reaction we can find the amount present at equilibrium per mole. पर मोल में कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो हम लोग फाइंड करेंगे. सो डिसोसिएशन, degree of dissociation of undissociate molecule is 1 minus alpha. Degree of dissociation of H plus ion is alpha. Degree of dissociation A minus is alpha. मतलब alpha amount of H plus ion A minus is present in aqueous solution. Similarly 1 minus alpha is present in the aqueous solution. So concentration at equilibrium per mole dm cube, okay, is 1 minus alpha upon V. So undissociated molecule का concentration कितना है, 1 minus alpha upon V. So concentration of H plus ion is alpha upon V. Concentration of A minus is alpha upon V. Okay. So putting this value in the equation 3.3 to form Ka is equal to alpha upon V into alpha upon V divided by 1 minus alpha upon V. So 1 V get cancelled to form alpha square upon 1 minus alpha V. Okay. So according to the concentration term, initial concentration is considered as C, small c. So small c is the initial concentration of an acid in mole per dm cube and V is the volume in dm cube per mole. Then C is equal to 1 upon V. So by putting the value of 1 upon V in the 3.5 equation to get Ka is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. This is equation number 3.6. For the weak acid, alpha is very small. Okay, so degree of dissociation is very small. Okay, so 1 minus alpha is nearly equal to the 1. Okay, so put the value of 1 minus alpha is equal to 1 in the equation to form Ka is equal to alpha square V and Ka is equal to alpha square C. Okay, so according to this we can find the dissociation constant Ka. Now degree of dissociation, how to find the degree of dissociation? By rearranging the equation. Alpha is equal to square root Ka upon C or alpha is equal to square root Ka into V. Okay, so by using this equation we can find the degree of dissociation or dissociation constant. Okay, now next term according to the weak base. Okay, वीक बेस का रिएक्शन हम लोगों ने देखा था. BOH इज इन एक्वियस मीडियम, रिवर्सिबल एरो, B प्लस एक्वियस प्लस OH माइनस एक्वियस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने ये चार्ट एसिड में देखा. सिमिलरली एज इन अ बेस, 1 मोल ऑफ बेस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम VDM क्यूब. देन amount present at equilibrium is 1 minus alpha, that is the undissociated molecule. Dissociation of B plus is alpha, OH minus is alpha. Concentration of BOH in equilibrium is 1 minus alpha upon V. B plus is alpha upon V. OH minus is alpha upon V. So by applying the law of mass action to get the equation 3.4, so put the value of value of BOH, concentration of BOH, concentration of B plus, concentration of OH minus to form Kb is equal to alpha upon V into alpha upon V divided by 1 minus alpha upon V is equal to
alpha square upon 1 minus alpha into V. So V get cancel to form alpha square upon 1 minus alpha V. Okay. Similarly, in case of weak acid and weak base, Ka and Kb is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. Okay. Only the concentration of term is different. Okay. So alpha is equal to alpha is equal to square root Kb into V, or alpha is equal to square root Kb upon C. So by using this formula we can find the degree of dissociation in weak base also. Okay. Now next part is the pH scale. So instead of writing concentration of H3O plus ion in mole per dm cube, sometime it is converted to express it on the logarithmic scale, is called as the pH scale. ओके जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या H3O प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग मोल पर डीएम क्यूब में जो शो करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन शो इन द लॉगरिथमिक स्केल. लॉगरिथमिक स्केल में अगर हम लोग वो इंडिकेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल. ओके. So next part is the definition of pH and pOH. So the pH of a solution as the negative logarithm to the base 10 of a concentration H plus ion in solution in mole per dm cube. Okay, that is pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus ion. This is called as the pH. Now pOH, so defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ion in solution. Okay, pH is the minus log to the base 10 concentration of H plus ion, and pOH is the minus log to the base 10 OH minus ion. Okay, so next part is the relation between pH and pOH. The ionic product of water having H plus ion and OH minus ion. Okay, so Kw is equal to the concentration of H3O plus into concentration of OH minus ion. Okay, so this is the ionic product of the water. Now Kw is the dissociation constant of water. So dissociation constant of water is equal to 1 into 10 raised to minus 14. 1 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin, and the concentration of H3O plus into concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 14, because value of Kw is 1 into 10 raised to minus 14. Okay, so taking log on both sides, so log to the base 10 concentration of H3O plus log to the base 10 OH minus is equal to minus 14. Log to the base 10 10 raised to minus 14 is equal to minus 14, and log to the 1 is 0. Okay, so minus 14. So minus 14 converted into plus 14 means multiply by minus 1 on both sides to form minus log to the base 10 concentration of H3O plus minus log to the base 10 OH minus is equal to 14. So according to the definition of pH and pOH, above equation converted into pH plus pOH is equal to 14, because definition of pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H3O plus ion, and definition of pOH is minus log to the base 10 OH minus ion. Okay, so according to the pH and pOH, we can write as pH plus pOH is equal to 14. Okay, so this is the relation between pH and pOH according to the definition of pH and pOH is equal to 14. Okay, now today we stop here. Remaining part of this chapter we can learn in the next lecture. Okay, thank you all of you.